जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लेट्स बिगिन। ओके वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलें जी, फाइन। begin. Okay, quickly let me tell you my objective for today. आज इंशाल्लाह हम we will continue with what we were doing yesterday, and I will inshallah proceed with the idea. और आज हम basically करेंगे natural selection and evolution. I'm slightly jumping on the topic, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि इस पे एक typical skeletal answer होता है इसका और सारा सिलसिला, तो इसलिए I thought it's appropriate that we do this today, inshallah. So our topic today is natural selection. ठीक है, और इसके हम 7 आज papers देखेंगे extensively. Okay, now how will I proceed with this topic? सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेनस्टॉर्म करके समझाऊंगा कि what all this idea of natural selection and evolution is all about. That will be number one. The वो brainstorming notes होंगे, एग्जाम परस्पेक्टिव से शायद वो इतने रेलेवेंट ना हो, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. फिर फेज टू में हम आज मैं आपको लिस्ट करूंगा कि एग्जाम परस्पेक्टिव से with what points and with what words are you supposed to explain natural selection. ठीक है, and then number three we will look at papers today. जो जितने भी कुछ सारे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने कोई 7-8 क्वेश्चंस जमा किए हैं. अल्लाह करे कि आज हम वो सारा मैनेज कर पाएं, बट एटलीस्ट 4 or 5 क्वेश्चंस इंशाल्लाह. सो आई प्लान टू बेसिकली आई एम पिकिंग अप दिस टॉपिक एज अ चंक, एंड इंशाल्लाह that's what I will do today. Okay, so अगर मैं आपसे पूछूं कि कल हमने बात की थी, वेरी क्विकली वी टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ वेरिएशन. ओके, और इससे ही रिलेटेड बात है, तो थोड़ा सा जरा हम बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं व्हाट वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे. I said there are two types of variations, the discontinuous and the continuous. Just to sum everything up and to give you everything in a bird's eye view, discontinuous variation is a type of variation in which is controlled by genes only. Okay, और इसकी few forms होती हैं, and all of these points that we talked about in detail, I'm not going to go into details. And then continuous variation was a type of variation that was responsible because of both the factors. Okay, the genetic factors and the environmental factors. ठीक है, और फिर इसका जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है. और एक नई चीज मैंने आपको कल बताई थी, एंड दैट वाज अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हिच वाज के अभी तक हमने ये देखा था कि एक जीन जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल कर रही है, बट व्हाट वी सॉ यस्टरडे वाज दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स they determine one particular characteristic. Yani this was something new for us. Back in inherited change, we only saw different genes controlling different characteristics. But now we have a lot of genes controlling only one characteristic. Yani कि इस तरह की भी possibility हो सकती है. That's known as polygenes. And I said that we say that such alleles, they show additive effect, which means they add on, as in, and give that one phenotype. ठीक है, और इसको हम polygenic inheritance भी कहते हैं, and we talked about this yesterday. Now, uh, I natural selection और इस टॉपिक को बेसिकली हम 3 लेयर्स में देखेंगे. मैं आपको इस टॉपिक को नटशेल में समझाता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि what all of this thing was about. So basically we will understand this topic in terms of 3 layers या levels if you like. Okay, सबसे पहले आपने ये समझना है कि वेरिएशन की हमने कल बात की थी. सो वेरिएशन से हम प्रोसीड करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की तरफ, यानी कि टुडे वी विल सी द लाइन ऑफ आर्गुमेंट बिल्डिंग ऑन द फॉलोइंग के वेरिएशन की वजह से देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस व्हिच इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, एंड देन बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज स्पीसिएशन, which is basically evolution. Okay, which is species evolving over the period of time.
ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम, यानी कि मैं ऑफ कोर्स आपको आज डेफिनेशंस वगैरह भी दूंगा और सारा कुछ करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ माय टुडेज लेसन आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड अ ब्रेनस्टॉर्म ऑफ व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट एंड व्हाट डार्विन एंड ऑल ऑफ दोस guys they did, उन्होंने क्या पब्लिश किया, क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, क्या डिडक्शंस थी। ऑफ कोर्स एग्जाम में कभी भी वो ए लेवल्स में ये नहीं पूछता कि डार्विन ने क्या ऑब्जर्वेशंस की, क्या डिडक्शंस की, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप दैट क्रूड अंडरस्टैंडिंग अपॉन व्हिच द क्वेश्चंस आर बिल्ट बेसिकली। ओके, तो दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल। नीडलेस टू से, यू डोंट नीड टू रिमेंबर देयर नेम्स एनीवे। अंकल डार्विन इज फेमस एनीवे। सो इन्होंने अपने आइडियाज को पब्लिश किया था। इन्होंने बेसिकली, सो दीज वर टू गाइस, ओके लेट मी कॉल देम। एक थे अंकल डार्विन और एक थे अंकल वैलिस। ओके, अंकल वैलिस, ठीक है। इन दोनों ने जो है दे मेड सम ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो दे थॉट, इनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने कहा चलें हम कुछ बात करते हैं बड़ी अच्छी किस्म की। They made some observations, and these observations are key for us to develop a very good understanding of this topic. ठीक है, ये दोनों के जहन में ख्याल आया, ये अकेले अंकल वैलिस के जहन में नहीं था, ये दोनों के, और दोनों ने एक ही आइडिया प्रपोज किया। The first observation, so these are observations that basically they made. ठीक है, ये इनकी observations थी। क्या observations थी? Number one, they observed that organisms produce far more offsprings that are needed to replace them. Organisms produce more offsprings more offsprings than are needed to replace them, than are needed to replace them। यानी कि मैं इसकी मिसाल क्या है, अगर at the present हमारी पॉपुलेशन है, फर्ज करें नंबर 100, मैं सपोज करने के लिए समझा रहा हूँ, 100 यूनिट्स है फॉर एग्जांपल, 100 लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो आज से 100 साल के बाद भी हमें 100 लोगों को टेक्निकली रिप्लेस करना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनिज्म नंबर टू रिमेन द सेम। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कि अ लॉट। एक सेकंड होल्ड करें जरा प्लीज बच्चों, यार क्यों चीख रही हो? Okay, apologize. All right, so that was the first thing that they observed कि भाई, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक सिंगल पेयर ऑफ रैबिट है और वो मैं कहता हूँ कि they are capable of producing almost 500 rabbits, okay। और इसी तरह कि एक फिश कॉड है, it can lay 5 million eggs in a year। यानी कि हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स काफी ज्यादा रिप्रोड्यूस करके जो है वो, यानी कि अनलाइक ऑफ कोर्स ह्यूमंस, उनका उन्होंने देखा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा जो है वो रिप्रोड्यूस करके देयर ऑफस्प्रिंग्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। द सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट दे मेड वाज कि ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस तो हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ओवर पॉपुलेशन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिस्पाइट of overproduction, as in overproduction of population, of course, despite of overproduction, population size जो है, population size that basically stays constant over long periods of time। ठीक है जी। और एक तीसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, और वो तीसरी ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल सी थी। वो क्या थी कि जी ऑल स्पीशीज शो वेरिएशन, ठीक है। ये तीन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की
नंबर वन, एक तो जी बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, ठीक है, एंड नंबर टू, डिस्पाइट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो पॉपुलेशन का साइज है वो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्या मतलब, उसका ग्राफ बढ़ते ही जाना चाहिए, लेकिन उसका ग्राफ बढ़ता नहीं जाता, उसका ग्राफ स्टेबल रहता है, ठीक है, और ऑल स्पीशीज दे शो वेरिएशन। दीज वर द थ्री ऑब्जर्वेशंस दैट दे मेड। फिर उसके बाद उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में कुछ डिडक्शंस किए। उन्होंने कहा, बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है, यानी कि why is all of the why the things that they observed, why are they happening, and they made two conclusions. There were two deductions that they made, and that's basically what we're going to discuss. Again, ये जो जितना कुछ मैं लिख रहा हूँ, ये भी आप फिक्र नहीं करें, एग्जाम में आपने कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको सब बताऊंगा. You have to trust me on this, but just first try to understand. The first observation or deduction that they made, which was from the first point of their observation, वो क्या था कि इतने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन साइज जो है वो सेम रह रहा है. इसकी रीजन ये हो सकती है कि मेनी ऑफस्प्रिंग्स मस्ट नॉट सर्वाइव. मेनी ऑफस्प्रिंग्स डोंट सर्वाइव. यानी कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होने के बावजूद भी आई मीन पॉपुलेशन साइज तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन पॉपुलेशन साइज सेम रह रहा है. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मे बी दिस इज बिकॉज मेनी ऑर्गेनिजम्स दे डोंट सर्वाइव, और दे एंड ऑफ कोर्स इफ दे डोंट सर्वाइव उसका क्या मतलब है, दे डाई. क्या ख्याल है, व्हाई डू यू थिंक दे डाई, बिकॉज ऑफ व्हाट? कैन यू थिंक ऑफ दिस पॉइंट, राबिया एंड अरीहा? कोई वेरिएशन हुई होगी. competition between सर मुझे competition. फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया. Which first point, observation या deduction वाला? सर ऑब्जर्वेशन वाला. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिजम्स दे हैव अ वेरी लार्ज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कि एक रैबिट है, एक पेयर से 500 ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर है. ओके, एक फिश से one fish can almost lay 5 million eggs. That's what they observed. Okay, that's basically what the first point is. ठीक है, अच्छा जी. और फिर उन्होंने तो उनके, ठीक है अरिहा, क्लियर हुआ? अरिहा? जी सर क्लियर टू सर, लेकिन आपने उसके बाद, जी सर मुझे क्लियर हो गया, लेकिन सर उसके बाद आपने लिखा है देन आर नीडेड टू रिप्लेस, उसका मतलब क्या होगा? Then are needed to replace. Well, उसका मतलब ये है कि यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ, यानी कि फॉर एग्जांपल एट अ गिवन टाइम 500 ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कुछ अरसे बाद जब वो सारे मर जाएंगे तो बस पॉपुलेशन जीरो हो जाएगी? नहीं, आई मीन एटलीस्ट उतने ही तो प्रोड्यूस होने चाहिए ना उनको रिप्लेस करने के लिए. ऐसे ही है ना, सो दैट्स बेसिकली व्हाट इट मींस. जी सर ऐसे ही है. ठीक है ना, सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई मीन. और फिर उन्होंने कहा कि डिस्पाइट ऑफ दिस ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है और स्पीशी वेरिएशन शो कर रहे हैं. अब वो डिडक्शंस कर रहे हैं कि ये इसलिए हुआ होगा बिकॉज many offsprings don't survive, they die because of competition between the following, between the food, यानी कि resources आपके जितने हैं ना, food है, shelter है, cold, यानी कि cold हो गया, disease हो गया, all of these are factors that, I mean, you have talked about this idea of competition. This is not an alien idea for you. So that's their first deduction, the basically that they made. ठीक है, और डार्विन ने इसको जो नाम दिया, डार्विन ने इसको कहा struggle for existence. Struggle for existence. No, this is not the key word, as I said. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये थी उनकी पहली ऑब्जर्वेशन. दूसरी ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी? उन्होंने, and that is the key for what we have to understand in natural selection today, कि individuals that are best adapted to their environment are the most likely to survive. Individuals best adapted to the environment are going to survive. ठीक है, और वो survive करेंगे और यही वाले reproduce करेंगे जो survive कर गए हैं. ठीक है, और
इसको उसने कहा नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. By the way, the survival of the fittest is a term that the examiner does not like, but since this was the original term that was proposed, so I mean we're bound to use this. Okay. अच्छा जी, अब आप देखें कि खास तौर पे सेकंड और राबिया बच्चे, are you on the same page with me so far? कुछ समझ में आ रहा है? Are you following so far? Yes, sir. Okay, great. चलें जी. अब पॉइंट जो डिडक्शन बी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज नाउ. So now I'm transitioning to my next level. I'm going to introduce you to some terminologies, some keywords that I will use when I will explain natural selection. Okay. आप देख रहे हैं कि there are some best या better adapted individuals. ठीक है जी, जो कि कंपटीशन में compete कर जाते हैं फूड में और harsh conditions में और they survive diseases. Okay. यानी कि ये best adapted individuals कौन हैं? They are individuals that are most likely to survive. Most likely to survive. और यही हैं जो कि आगे जाके क्या करेंगे? सिर्फ इनके सर्वाइवल से हमें फायदा नहीं होगा, बट दे आर द वंस हु रिप्रोड्यूस. ठीक है. एंड वी से कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ओवर मेनी जनरेशंस the genes that they have, they give them what is known as selective advantage. ठीक है. यानी कि बहुत क्रूड वे में अगर मैं आपको बताऊं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है तो वो होगी, नेचुरल सिलेक्शन मींस दैट द एनवायरनमेंट इज सिलेक्टिंग व्हिच इंडिविजुअल्स पास ऑन देयर जीन्स. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेचुरल सिलेक्शन. और ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, बाय द वे, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ. नेचुरल सिलेक्शन मींस दैट एनवायरनमेंट is selecting which individuals pass on their genes. Excuse me. Environment is selecting which individuals pass on the genes. ठीक है जी, on genes. तो ये और बेसिकली इसको अगर हम समराइज करें तो वो कहते हैं कि जी देखें, वेरिएशन हुई शुरू में जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन हुई और जिसकी वजह से इवेंचुअली एवोल्यूशन हो गई. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट. लेकिन इसको अब इंशाल्लाह हम जरा थोड़ा सा डिटेल में और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है जी. सो सबसे पहले जो हम जिस चीज की, नाउ आई एम बेसिकली गोइंग टू माय नेक्स्ट लेवल टुडे. ये जितना कुछ मैंने आपको लिखवाया है इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. So now I'm going to introduce you to an idea which is part of natural selection, लेकिन उसको मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो natural selection की explanation के बीच में आता है और फिर बच्चे थोड़े confused हो जाते हैं. So I'm going to explain that first and then inshallah we are going to talk about the next thing. Okay? अच्छा जी. इसको जो अगली बात हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं selection pressure. आपको याद होगा ओ लेवल्स में आपने एक पेपर मॉथ की एग्जांपल देखी थी. कुछ जो मॉथ फ्लाइज हैं दे आर कैमोफ्लेज्ड मोर than the others. I hope you remember the example of some organisms, some insects being camouflaged more, maybe because of green grass, yeah, whatever the case was. तो यानी कि उस केस में आप देख रहे थे कि जो camouflage हो गए वो they had this these genes of this color gave them this advantage and they were selected and they survived and they reproduced. Selection pressure का क्या मतलब है? Selection pressure basically, इसको मैं इसकी definition में आपके सामने लिखता हूँ फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. It's an environmental factor that grants greater chances of survival
that grants greater chances of survival and reproduction on some individuals and reproduction on some individuals than on other in a population, than on other in a population. ठीक है जी. Okay. All right. अच्छा जी, अब ये जो सिलेक्शन प्रेशर्स हैं, इनकी 3 कैटेगरीज हैं और इनकी 3 कैटेगरीज को हम डिफाइन भी करेंगे और इनकी डायग्राम्स भी हैं, उनको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, and then we will come to the explanation. So there are 3 types. The first one is known as stabilizing selection. The second one is known as directional selection. And the third one is known as disruptive selection. नाम खौफनाक है लेकिन बहुत सिंपल से आइडियाज हैं. So disruptive selection. Okay. Now, if I were to, show all of these ideas with the help of a graph, then they should look. I'll draw the graph. सबसे पहले हम बात करते हैं stabilizing selection की. Let me give you the heading of stabilizing selection. Stabilizing selection. ठीक है, that's number 1. So how would the graph of stabilizing selection look like and why? So y-axis पे आपके numbers in population, numbers in population. ठीक है जी. अच्छा, अब ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो ग्राफ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ. Should be something like the following. Okay. क्या मतलब कि over a period of time and the number of that's basically how the graph is supposed to look like. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद और ये जो x एक्सिस पे ये डिपेंड करता है हम किस फैक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद इसका जो आफ्टर यानी कि लेट मी डिफाइन दिस फर्स्ट, फिर मैं ग्राफ की तरफ आता हूं. इसकी डेफिनेशन जरा नोट करें. इफ organisms are well adapted, यानी कि एक एनवायरनमेंट है, उसमें एक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वेल अडेप्टेड हैं, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, नॉर्मल सी सिचुएशन है, एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज. इफ द ऑर्गेनिजम्स आर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट and the environment does not change. Does not change. ठीक है जी. Natural selection acts against the new phenotypes. Acts against the new phenotypes and acts in favor of the average phenotype, and acts in favor of the average या जो status को जो already exist कर रहे हैं average phenotypes. क्या मतलब देखें, let me give you an example. तो एक हम किसी भी environment की बात करते हैं, उसमें कुछ organisms रह रहे हैं, normal environment है and everything, and बहुत ज़्यादा changes नहीं हैं.
तो यहाँ यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक माउंटेन एरिया है, ग्रीन ग्रास है माउंटेन के ऊपर, और जो है वो क्या कहते हैं, ग्रीन कलर के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैमोफ्लेज भी हो जाते हैं और इसलिए वो ज़्यादा उनकी प्रिडेशन भी नहीं होती, उनको खाना भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड स्टेबल एंड देयर कलर इज ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रेशर है वो यानी कि कोई इस तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है which will drive these green organisms to change their color and go into maybe some other color। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इसी जगह पे बर्फबारी शुरू हो जाती है, क्लाइमेट चेंज होता है और अब इस पहाड़ पे अक्सर बर्फबारी रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले यहाँ पे बर्फबारी कभी भी नहीं होती थी लेकिन यहाँ पे अब स्नोफॉल होती है, विच मीन्स कि अब वो जो ग्रीन वाले एनिमल्स थे, नाउ दे आर नो मोर बीइंग कैमोफ्लेज्ड। ओके, तो इसलिए वो इजीली प्रेडेटर उन पे अटैक कर देता है, प्रेडेशन हो जाती है उनकी। तो वो जो स्नो वाली एग्जांपल है, यानी कि कोई एनवायरमेंटल इस तरह का फैक्टर, जिस तरह मैंने स्नो की एग्जांपल दी है, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता था व्हिच कुड हैव कॉज्ड नेचुरल सिलेक्शन, बट यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, व्हिच मींस कि इस तरह का कोई एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो कि ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स नेचुरल सिलेक्शन। सो वी से दैट the natural selection is acting against the two extremes। okay, selection is against, यानी कि क्या मतलब कि बीच वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो इसका ग्राफ ओरिजिनली होगा वो इस तरह का होगा, ये जो बीच वाले ऑर्गेनिजम्स हैं which are green in my example, they are basically going to be very large in number, और कोई भी एक्सट्रीम वाइट कलर की हो या किसी और कलर की होगी वो हमारे लिए इसमें रेलेवेंट नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग। आई नो पोटेंशियली ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट मी फिनिश डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन फर्स्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू। हमारा आधा घंटा हो गया है, लेट्स टेक अ 1 minute break and then let's resume after the break। सर जी बताएं। सर सर जी मुझे ये ग्राफ नहीं समझ आया। ओके, हम ब्रेक के बाद रिज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट्स वेट फॉर ब्रेक, आई एम एंडिंग द सेशन, लेट्स